Hello everyone, welcome to the new session of Unacademy CAT. Okay, so guys, today's session is going to be on fill in the blanks, and the plan of the session is to discuss some interesting questions of fill in the blanks, and I hope this will be a very useful session for anyone who is writing CAT or CMAT or CET, because we will be discussing a lot of questions, and hopefully we will get to learn a lot of words. Okay, so let's get started. So before we start, guys, so these are the subscription plans that we have from Unacademy. Okay, so if you want to access the premium content that we have on Unacademy, basically अगर आप अपना time waste नहीं करना चाहते content search करने में, if you want to join proper batches, if you want to be a part of a proper structured program, guys, then you should consider Plus or Iconic subscription. Plus subscription is the more economical one, and Iconic subscription you have some additional advantages like you have a personal coach and OMATs. OMATs means other management entrance test. Okay, so guys, you can have a look at the pricing models, and you can see that we have a very economical pricing model. Per month basis पे guys, if you see जो सबसे economical आपको पड़ेगा, that is going to be 12 months course, and that is your 17,500, but with a 10% discount the price goes down by 10%, and it comes down to 15,750. Okay, so you have to use my code, guys. This is my code HSING. So आपको ये code use करना है, और जैसे ही आप ये code use करोगे, you will reduce your total price by 10%. Okay, so you can always use this code and get a reduction of 10% on whatever course you choose. Okay, so guys, these are the batches, and you can join any of these batches according to your convenience. So we have a 16th Feb batch, so that's a weekend batch. Then we have 18th February batch, that's a weekday batch. Okay, so the first two batches are for CAT. Then guys, anyone who is giving MHCT 2021, okay, 19th Feb से revision batch start हो रहा है. So if you are planning to give MHCT, ठीक है, तो आप ये batch join कर सकते हो, third वाला. Okay, so you can join this batch. You can take a 2-month subscription in that case. Okay, if anyone who is planning to give CAT 2021, then the 1-year subscription would be the best offer. Okay, and guys, this subscription discount is going to be there only for a few days, because कुछ time बाद ये discount हट जाएगा. So it's much better you take it today, because like then the discounts will be slashed. Okay, so it's a good idea that you take it now. Okay, so you can join any batch of your choice. Okay, so guys, start करते हैं. Let's get started with today's session. Okay, so we have the first question on screen. We will discuss some questions of lengthy blanks. First question on screen, guys. Let's see how many of you are able to answer this question. ठीक है. And in the next 1 hour, I'm going to take you through a number of these questions, and let's see how many of us are able to answer these questions. Okay, so we have 2 answers. Sankalp says B option. Anjali says B option. Okay. Okay, anyone else, guys? Anyone else would like to answer this question? Kash says D option होना चाहिए. Okay. Okay, Suhit says B option. Okay, Make in India also says B option. Okay, so I can see Sankalp, Anjali, and Make in India have said B option. Suhit also says B option. Nalin says D option. Kash says D option. Okay, so guys, discuss किया जाए इस question को. चलो, let's discuss this question. Okay, so Sankalp, Anjali, Suhit, Make in India, Al Saba, Noor Ansari, you people have given the correct answer. The answer is your B option, that is expression and ascertain, right? Okay, so now let me explain. This is a very
वेरी डुएबल क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है, काफी बेसिक और काफी डुएबल क्वेश्चन है गाइस। कैसे करना है, लेट्स सी। Since her face was free of dash, there was no way to dash if she appreciated what had happened. Okay, now just imagine this situation. Let's say there is a person who shows no expression on his face. ठीक है, तो उसके face पे कोई expressions नहीं आते. So when you have a person who shows no expressions on face, then it becomes very difficult for you to understand what is going in his mind. Okay, like you don't exactly know, right? Okay, because like how do you know that what is going in the mind of the person? By looking at his facial expressions. So imagine करो कि अगर आपके facial expressions ही नहीं आ रहे, then it becomes very tough for you to ascertain. Okay, what is ascertain, guys? Ascertain means to decipher or to understand. Okay, so when you ascertain something, it means you make sense of it, you understand it, you decipher it. Right. बाकी options देखो क्यों wrong हो जाएंगे. If I look at the A option, it says since her face was free of makeup. Okay, now makeup is not something that is contextually valid here, because you are trying to understand like what she thinks about a certain issue, because like you can see it says if she appreciated what had happened. Okay, so that means कि you are trying to understand what is going inside her mind. ठीक है, तो यहाँ पे makeup का तो कोई sense है नहीं. ठीक है, so we can rule out this option, guys. ठीक है, now look at C option. It says since her face was free of emotion. Okay guys, diagnose आप कर सकते हो क्या? Diagnose a right word to understand what is what is going in the mind of the person? You don't diagnose is not a word that we use in context of trying to understand what goes inside the mind of a person, right? Okay, you can ascertain, you can understand, okay, but then you cannot diagnose. डी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है गाइस? स्कार्स. द वर्ड इज स्कार्स. स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स रेफर्स टू डीप कट्स. ठीक है, जो फिजिकल कट्स होते हैं स्किन के ऊपर. ठीक है, लाइक है ना, दीज आर द डीप कट्स दैट यू हैव. ओके, सो दैट इज व्हाट स्कार इज. नाउ scars is something that is more physical in sense. We are trying to understand through the expressions on the face what is going in the mind of the person. तो scars का तो यार यहाँ पे कोई सेंस बनेगा नहीं, है ना? ठीक है, because scars is something that is more like a physical injury. Okay, and like we don't really know whether it's connected to any physical incident or physical injury and you have scars or anything. Okay, so we can cross this option out as well. Okay, hello Aman, how are you? So आंसर क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे आंसर इज गोना बी ऑप्शन बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so coming to the next question, guys, we have the next question on screen. Let's see who can answer this one. Abhi, anyone who can answer this question? Okay, so we have B option, D option. Aman says B option. Okay, so guys, काफी तरह के आंसर्स आ रहे हैं. B option and D option mostly. Okay. Okay, last 10 seconds, guys. Anyone else who would like to answer this question? Last 10 seconds. Okay. So, chalo, check karte hain. Let's see how many of you have answered the question correctly. Okay, so looking at the answers, I can see Anjali has answered the question correctly. Anjali Roy. Aman has answered the question correctly. Ash has answered the question correctly. Sankalp has answered the question correctly. Prema has answered the question correctly. Nalin has answered the question correctly. Okay.
So we have a few people. Okay, Samir has answered the question correctly. Okay, so we have a few people who have answered the question correctly. So guys, very good. Okay, so काफी लोगों ने आंसर कर दिया. Yes, Samir, that is the answer. B. Okay, so बिल्कुल B option ही आंसर है. But let's try to understand the logic why B option is the answer, right? देखो, football evokes a dash response in India compared to cricket that almost dash the nation. So, guys, as we all know, that football is not very popular in India. So the sort of response that we have for football is like very normal, very modest. It's very lukewarm. अब देखो lukewarm का meaning क्या होता है? Lukewarm basically is neither very good, it's not very bad, it's somewhat in the midway. So जनरली हम लोग जैसे ल्यूकवार्म वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आपका रिस्पॉन्स है या इवन व्हेन यू बॉयल द वाटर एंड द वाटर इज नीदर वेरी हॉट, इट्स नॉट वेरी कोल्ड, इट्स समवॉट मिडवे, दैट इज ल्यूकवार्म. ओके, ल्यूकवार्म को यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक सो रिएक्शन, राइट? सो जनरली अपन बोलते हैं ना कि यार इस चीज के ऊपर ना सो रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. ठीक है. Now tepid has the same sort of meaning. Tepid is also something that is not very exciting, and but like, you know, it's of the moderate or normal so level. ठीक है. But the problem with the A option is the word boiling, right? Because cricket boil नहीं करता nation को, cricket electrify करता है. Now when something electrifies, it means that it generates a lot of enthusiasm, and when something is lukewarm, it means it gets a so very normal sort of response. So this is, guys, the best option that we have here. And lukewarm is a word that we can use with water also, like the water is lukewarm, so that means it's neither hot not nor cold. So बीच का एक level होता है lukewarm, right? Turbid का मतलब क्या होता है? Turbid is something. Okay, yes अंजलि. ओके, हिंदी में उसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं. एब्सोल्युटली अंजलि, वो आपने बिल्कुल ठीक बताया. ओके, सो उसका मीनिंग वही होता है कि यार ना तो ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, समवट बीच में कहीं पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है, लोग ज्यादा एक्साइट नहीं हो रहे. ठीक है. टर्बिड का मतलब क्या होता है गाइस? टर्बिड का मतलब क्या होता है? टर्बिड इज एनीथिंग दैट इज अनक्लियर. Okay, like you talk about water. Okay, so when you talk about turbid waters, it's like unclear, it's hazy, it's vague. So you cannot have like a turbid response. There is nothing like a turbid response in English. Okay, and again, like the second option should be fascinates. Okay, तो ये भी wrong हो गया, because there is nothing in English like turbid response. Then you have this word apocryphal. Now, what is apocryphal, guys? Apocryphal का मतलब क्या होता है? Apocryphal is something of dubious authenticity. Dubious का मतलब क्या होता है? Dubious का मतलब क्या होता है? Dubious means something that is not genuine. Okay. So when something is not genuine, it is doubtful. Okay, that is when I use the word apocryphal. Now apocryphal generally हम लोग तब यूज करते हैं जैसे कि आपने कोई बात बोली है ना, and you cannot give evidence for it, and it's doubtful, like people don't really believe what you said, so that would be apocryphal. Apocryphal is anything that is of dubious authenticity or something that is doubtful. So again, apocryphal is not a word that goes with response. Okay, like there's nothing like a apocryphal response, है ना? ठीक है. So ये भी option हमारा rule out हो गया guys. Answer क्या हो जाएगा आपका? B option. That's going to be the right answer. Yes, Tamir. Okay, turbid is something that is murky, something that is unclear. Okay, like when you talk about turbid waters. Right. Chalo. Next question, pe guys. Let's move on. Okay. So moving on to the next question. Have a look and tell me what should be the answer.
Okay, so guys, let's discuss. Sankalp says D option, Ingita says D option, Aman says D option, Suhit says D option, Nalin D option, Kash says D option. Okay, so all of you guys have given the correct answers. Sankalp, Ingita, Aman, Suhit, Nalin, Kash. Okay, so all of you have given the correct answer. Yes, Samir and Sachin, correct answer. Okay, so guys, let me just tell you the reason for this. Pranav was correct answer. So the manners and dash of the novel rich is a recurrent dash in the literature. So what is the meaning of this term, guys? People who are newly rich. Okay, people who are newly wealthy or newly rich. Okay, like the ones who have just acquired wealth. Okay, they have just become rich. So when I look at this word, the manners and dash, okay, it basically means the behavior. Now, behavior के लिए क्या combination बनेगा? Manners and morals. Manners and morals. And let me tell you a very easy way to do this question. आप देखो यहाँ पे word आ रहा है literature. अब एक चीज सोचो, literature में थीम हो सकता है जो रिकरेंट है या मोटिव रिकरेंट हो सकता है. देखो रिकरेंट यहाँ पे वर्ड लिखा है. रिकरेंट बेसिकली समथिंग दैट रिपीट्स. Okay, and when you talk about a pattern in which literature is written, the word that we prefer in context of literature is theme, because you know that motive is nothing but an artistic design. Okay, so motive is mostly used like in the patterns of artistic design. When you look at the word story, तो story में क्या problem है guys? Actually जब अपन कह रहे हैं कि कोई चीज है जो repeat हो रही है बार बार, है ना, like for example you have a pattern in which something is repeating, then the preferred word is theme. पता है क्यों? Because understand this, theme is nothing but the topic of something, right? For example जैसे मैंने आपसे कहा कि like the books are written on the same theme. Okay, that means the topic is more or less similar. So when you use the word recurrent का मतलब वो चीज बार बार हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रही है. So एक similar topic पे चीजें बन रही है ना. So like when you look at literature and you are like you are looking at something that is recurrent, that means it's happening again and again. Okay, so the word would be theme. Okay, because you cannot have a recurrent story, because story is like specific, and theme is something that can be common, because like the topic or the theme of something that can be on the same lines. For example, like if I look at Chetan Bhagat, he has written all his books on the recurrent theme. That means it repeats, like the theme repeats itself, right? Okay, so यहाँ पे देखो guys, ये आ जाएगा manners and morals. That's the combination, and then you have the theme. Okay, in this A option you have motives, which is artistic design. We can rule this one out. यहाँ पे we have the story. We can rule this out, and in this case we have manners and wealth, which is again an illogical combination. We can rule this out. Okay, so the answer is going to be, guys, D option, that is morals and theme. Okay, 30 seconds, guys. Next question. Have a look and tell me what should be the answer. Okay, so guys, discuss करें. Let's have a look at the answers. So I have a lot of people answering option C, and then some of them are answering option A. So guys, देखते हैं किस किस का आंसर सही है. So yeah, so Tanya correct answer, Aman correct answer, Nalin correct answer, Sankalp correct answer, Pranav correct answer, Suhit correct answer, Kash correct answer, Rama Rizvi correct answer, Sameer correct answer. So what is the answer, guys? The answer is going to be
C option, that is unlikely to succeed. Now, what is the context here? The context is, in a situation like the one emerging in southern Afghanistan, America's present strategies dash to succeed. So, guys, what is the discussion? The discussion says कि in the current situation, like the one that is happening in Afghanistan, अमेरिका की स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है ना? ठीक है, इट्स हाईली डैश टू सक्सीड. नाउ if you understand something, you will see that when I use the preposition to, okay, the phrase that we use normally is like something that is likely to succeed, okay, or something that is unlikely to succeed. Likely means there is a good possibility that it would be successful, and when I say unlikely मतलब the possibility or the probability is on the lower side, है ना? तो ये दो phrases होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, preposition to के साथ. We say likely to succeed means there's a good possibility, and when I say unlikely to succeed, that means that the chances are very less. ठीक है, तो यार ऐसा कोई combination बन सकता है क्या impractical to succeed? First of all, it's not that, like, you cannot say that this strategy is impractical to succeed. You can always say it is impractical to implement, okay, because when you talk about succeed, it is either going to be successful or it's not going to be successful. So when it's going to be successful, you will say likely to succeed. When it's not going to be successful, you are going to say unlikely to succeed. तो impractical का तो यार यहाँ कोई सेंस बनेगा नहीं, है ना? Okay, illustrious is some, again, like a illogical word. You don't take the preposition to with illustrious, तो to preposition जाएगा नहीं इसके साथ. Impossible to हो सकता है, but the problem is that there is nothing like highly impossible. Okay, when something is impossible, okay, it's either impossible or it's possible. There's nothing like highly impossible. Okay, because guys, आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो चांसेस की हो रही है कि यार इस पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के कितने % चांसेस हैं. तो अनलाइकली टू सक्सीड का मतलब लाइक द चांसेस आर ऑन द लोअर साइड. ओके, सो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. देयर इज नथिंग लाइक हाईली इम्पॉसिबल. ओके, so you will rule this one out as well. The answer is going to be option C. Okay, ठीक है. और जिन लोगों ने ए ऑप्शन मार्क किया था ना, तो उनको एक चीज ध्यान रखनी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना, तो सक्सीड तभी तो लिखा है. तो देयर इज गोइंग टू बी नो कॉम्बिनेशन लाइक इम्प्रैक्टिकल टू सक्सीड. ओके, you can always say impractical to implement. Now that can be correct, but when you talk about succeed, it is either going to be likely to succeed or it's going to be unlikely to succeed. Okay, and unlikely का मतलब obviously the chances are on the lower side. Okay, so this is an interesting question, guys. Have a look at this one. Let's see how many of you can answer this question correctly. Okay, so I believe this is an interesting question. Okay, so I can see many of you are answering option A. Tanya says A option, Pranav says A option, Rehma Rizvi says A option. So I believe most of you think that it should be A option. Okay, let's see if we have some diversity here. Okay, so maximum लोगों को लग रहा है कि भाई A option होना चाहिए. Suhit says A option. So Nalin says B option. Nalin thinks that it should be option B. Anjali says A option.
Okay, last 10 seconds, guys. Anyone else would like to answer this question? 10 more seconds. Okay, so let me just tell how many of you have answered the question correctly. So as I can see, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि Nalin has answered the question correctly. So Nalin, correct answer. And Aman has answered the question correctly. So guys, the answer is going to be option B. And to understand the logic why we have B option as the answer, so let me explain why B option. Okay, so guys, answer B option hoga. Okay, and only two people have answered the question correctly. Okay, so that is Aman and Nalin. Okay, so Aman and Nalin have answered the question correctly. So answer is B option, guys. Kyun hoga B option? Let's try to understand. Okay, Sameer has also answered B option. So देखो क्वेश्चन क्या है, some paleontologists debate whether the diversity of species has dashed. So guys, look at this, diversity of species. ठीक है, diversity of species ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ओके, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितनी वैरायटी है आपके पास स्पीशीज के अंदर, है ना. अब एक चीज समझना, किसी चीज की जो डाइवर्सिटी होती है वो या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. ठीक है, लाइक आई थिंक वी ऑल हैव हर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग अगर आप जानते हो तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट वी हैव इन द एनवायरनमेंट. तो जनरली हम ऐसा कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है ना, लाइक वी हैव फ्यूअर स्पीशीज रिमेनिंग एंड लाइक एवरी ईयर वी हैव अ लॉट ऑफ स्पीशीज दैट बिकम एक्सटिंक्ट. सो always understand this, that the diversity will either increase, okay, or it will decrease. ठीक है, there is nothing like escalation of diversity, there is nothing like changing of diversity. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप देखो कि सी ऑप्शन में लिखा है एक्सपैंडेड. ओके, डाइवर्सिटी कभी एक्सपैंड हो सकती है क्या? कभी एक्सपैंड नहीं हो सकती, या तो वो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी. देन यू लुक एट दिस वर्ड डिसकंटिन्यूटी. Okay, now if you look at this second wala blank, you have to place an option that is like contrary to this. Okay, decreased biodiversity, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश के साथ जो ऑप्शन आ रहा है, ओके, वो कंपैरेबल ऑप्शंस होने चाहिए. मतलब अगर एक कम हो रही है तो एक ज्यादा हो रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, एंड अंडरस्टैंड समथिंग कि डाइवर्सिटी के साथ हमें एक चीज पता चल गई कि हमारी डाइवर्सिटी या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि एक्सपेंशन जैसी कोई चीज होती नहीं बायोडाइवर्सिटी में. देयर इज नथिंग लाइक एक्सपेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, नाउ let us see कि why be option. Okay, let's try to understand बाकी का question. Some paleontologists debate whether the biodiversity of species has increased. Okay, so biodiversity increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है. So let's say B option को अपन एक बार consider करते हैं, increase हुई है. डिबेट इस चीज पे चल रही है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है क्या. सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड और वेदर imperfections in the fossil record only suggest greater biodiversity today, while in actuality there has been either dash or decreased biodiversity, right? तो देखो, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी की तो आपने ऊपर बात कर दी. अब आप ये कह रहे हो कि या तो यार एक्चुअली हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं हुई हो, लेकिन क्योंकि हम लोग जो मेथड्स यूज करते हैं उन मेथड्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, उन मेथड्स में थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, उस चीज की वजह से हमें एक गलतफहमी होगी हो कि वो इंक्रीज हुई है, लेकिन रियलिटी में बायोडाइवर्सिटी या तो स्टेबल है, ओके, स्टेटस क्यू मेंटेन हो रहा है, या फिर डिक्रीज हो गई है. मेकिंग सेंस? ओके, सो गाइस देखो, ऐसा है सिचुएशन कि पैलेंटोलॉजिस्ट डिबेट कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है क्या. कहीं ऐसा तो नहीं कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं हुई हो और हमें सिर्फ एक गलतफहमी हो गई हो, कंफ्यूजन हो गया हो कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है, जबकि रियलिटी में द बायोडाइवर्सिटी इज ईदर स्टेबल. Okay, that means like the status quo is maintained, like it's stable. Okay, जहां पे थी जितनी थी उतनी है, या फिर actually decrease हो गई हो, है ना. ठीक है, so like something that is stable or something that is not changing, उसके लिए word क्या होता है? Stasis. Now what is stasis? Stasis means something that is constant, something that is status quo, something that is not changing, something that is unchanged. जितनी थी उतनी ही है. ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि रियलिटी में डिक्रीज हो गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रियलिटी में वो उतनी ही हो जितनी पहले थी, है ना. अब एक चीज समझना, डिक्रीज के साथ और कौन सा वर्ड आ सकता है? या तो स्टेबल है या डिक्रीज हो गई है. ठीक है,
और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एस्केलेशन. नाउ एस्केलेशन, देयर इज नथिंग लाइक एस्केलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना. तो एस्केलेशन प्राइसेस वगैरह की अपन कंटेक्स्ट में कभी कभी बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एस्केलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना. ठीक है. प्लस इंक्रीज वाले को तो अपन ने रूल आउट कर ही दिया ना, ऊपर हम लोगों ने कंसिडर कर ही लिया कि इंक्रीज वाला तो हो सकता है कि एक कंफ्यूजन हो और रियलिटी में या तो उतनी ही है या डिक्रीज हो गई, तो एस्केलेशन को तो अपन वैसे भी क्रॉस कर सकते हैं. देयर इज नथिंग लाइक डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी. डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसी कोई चीज नहीं है, और यहाँ पे पैरेलल एलिमेंट चाहिए हमें कि बायोडाइवर्सिटी या तो कम हुई है या तो उतनी की उतनी है ना. ठीक है, तो इसको अपन रूल आउट कर सकते हैं. ठीक है. और डी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे वी नीड टू ऑप्शंस दैट टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, बिकॉज इंक्रीज की तो हमने ऊपर बात कर ली, एंड वी आर सेइंग दैट इंक्रीज वाला तो हो सकता है कि फिगर ही गड़बड़ हो. ओके, रियलिटी में बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली इन दोनों में से एक है. ठीक है, दैट मींस या तो वो स्टेबल है या तो वो कम हो गई है ना. अब कम वाला डिक्रीज हो गया तो उसका सिनोनिम में रिडक्शन तो यहाँ पे प्लेस करूंगा नहीं. ठीक है, सो आई कैन एक्चुअली क्रॉस दिस वन आउट एज वेल, राइट. Okay, so guys, this was one of those questions where in order to answer this question it's very important that you understand the context. Okay, so उसकी जो स्टोरी है ना वो थोड़ा सा समझना यहाँ पे जरूरी था. कि स्टोरी यही थी कि आपने इनिशियली बोला कि भाई डिबेट ये चल रही है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन अब पैलेंटोलॉजिस्ट को ये लग रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली इंक्रीज नहीं हुई है, वो तो सिर्फ एक कंफ्यूजन था. और हो सकता है कि भाई मेथड में इम्परफेक्शंस की वजह से रियलिटी ये हो कि बायोडाइवर्सिटी या तो स्टेबल चल रही है या एक्चुअली कम और हो गई हो, है ना. सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड द स्टोरी इन ऑर्डर टू लाइक आंसर दिस क्वेश्चन. शांतनु यार वो क्वेश्चन को ना पूरा चेंज कर देगा मीनिंग. ठीक है, अभी तो इधर और के साथ ही सॉल्व करो. ठीक है, क्योंकि नीदर वाला तो क्या है कि वो कंटेक्चुअली उसको इनवैलिड ही कर देगा क्वेश्चन को, है ना. अब उस डिबेट में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा. और हाँ, ये चीज मैं आपको आंसर कर देता हूँ कि व्हेन यू हैव ईदर एक्स और वाई, तो ईदर एक्स और वाई के अंदर जो एक्स और वाई ऑप्शंस होते हैं ना वो डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, सो ईदर एक्स और वाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना ईदर एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो इसलिए मैंने डी ऑप्शन को हटा दिया क्योंकि डिस्टिंक्ट हो नहीं पा रहा. देखो यहाँ पे रिडक्शन लिखा है और यहाँ पे डिक्रीज लिखा है. तो अगर ईदर एक्स और वाई में एक्स और वाई डिस्टिंक्ट होते हैं तो फिर डिक्रीज और रिडक्शन तो आ नहीं सकता ना, बिकॉज रिडक्शन एंड डिक्रीज आर वन एंड द सेम थिंग, राइट. सो दैट इज वाई वी हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन डी. Okay, so I hope guys all of you have been able to understand this question, and let's move on to the next one. Okay, so next वाले पे चलते हैं guys. So coming to the next question, have a look at this one as well, and let's see how many of you are able to answer this question. Okay, Rema Rizvi says option D. Okay, Rema says option D. Guys, what do you think? क्या होना चाहिए? Pranav says C option. Okay, so I can see a lot of variety here. Okay, so we have people answering D option, C option, E option. Sankalp says E option. Okay. Okay, last 10 seconds, guys. Anyone else would like to answer this question?
Okay, so let's take this for discussion. So let's see who all have answered the question correctly. So Pranav, correct answer. Samir, correct answer. Inkita, correct answer. Okay, so Pranav, Samir, and Inkita Basu Roy. Okay, so these people have answered the question correctly. So answer क्या होगा भाई? Answer होना चाहिए आपका C option. Okay, and let's try to understand the meaning of these words. So innovative we all know, enchanting we all know, right? तो guys इन दोनों को तो अपन पहले क्रॉस कर देते हैं because this is a negative situation. You cannot have positive words like innovating and enchanting. Enchanting is something like that attracts you, something that like mesmerizes you. So anything that is enchanting is mesmerizing or attracting or captivating. तो जो चीज आपको attract करती है वो enchanting होती है. तो यहाँ पे we have the word sinister. Sinister का मतलब evil होता है. Okay, and you see this conjunction and here. So obviously we need a negative word है ना. Evil के साथ तो यार आप कोई ऐसा word enchanting वगैरह तो pair करोगे नहीं. So we can rule out this option first and second. ओके एक्सिजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? एक्सिजेंट का मतलब होता है समथिंग दैट्स अ प्रेसिंग डिमांड. ओके, समथिंग दैट इज अर्जेंट. नाउ डू यू रियली थिंक दैट यू कैन प्लेस द वर्ड एक्सिजेंट विद सिनिस्टर? बिकॉज इविल के साथ तो कोई ऐसा वर्ड आएगा ना जो नेगेटिव कंटेक्स्ट में एक इविल पर्सन के कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल होता हो. लाइक फॉर एग्जांपल डिसइनजेनुअस. नाउ हु इज अ डिसइनजेनुअस पर्सन? A disingenuous person is someone who is basically who's not genuine, a person who is manipulative, a person who is deceptive. Okay, जो लोग deceptive होते हैं, राइट, मैनिपुलेटिव होते हैं, है ना, तो ये आ सकता है. ठीक है. एक्सिजेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑफ अर्जेंट और प्रेसिंग नेचर. लाइक फॉर एग्जांपल द अर्जेंट डिमांड, तो यू कैन से दैट एक्सिजेंट डिमांड ऑफ weapons. Okay, exigent is like something that is urgent or pressing. So we can rule out this exigent also because again exigent sinister के साथ जाएगा नहीं. ठीक है. What are the options then we can have? Finally अपने को दो ऑप्शन बचते हैं, C ऑप्शन और E ऑप्शन, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं कि डिसइंजेनुअस और ट्रैजिक दोनों जा सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले में क्या जाएगा? विक्टिम्स जाएगा कि सफरर्स जाएगा, है ना? ठीक है. So let's try to understand this. So let's see. The genocides in Bosnia and Rwanda, apart from being misdescribed in the most evil, that is sinister and disingenuous manner as ethnic cleansing. तो अब यार एक चीज समझना, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एक हिंट आ रहा है, मिसडिस्क्राइब्ड. मिसडिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ? मिसडिस्क्राइब्ड का मतलब ये हुआ कि जो रियल नेचर है आपने उसको वो नहीं बताया, आपने उसको कुछ और बना के बता दिया. ठीक है. सो अब एक चीज सोचो कि अगर आपने किसी चीज का रियल नेचर नहीं बताया, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू बी डिसेप्टिव. That means you are trying to be manipulative. Now, which word is closer to the idea of being deceptive or manipulative or indulging in eyewash? ठीक है. आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो. तो जब आप ऐसी कोई बात करते हो कि जहां पे आप लोगों को थोड़ा सा एक डिसीव कर रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वहां पे गाइस ज्यादा बेटर ऑप्शन जाता है डिसइनजेनुअस. बिकॉज अ डिसइनजेनुअस पर्सन वुड नॉट बी जेन्युइन. ही विल हैव दिस क्वालिटी of like deceiving people, of manipulating people, of saying something and doing something else. Okay, so यहाँ पे misdescribe लिखा है. Misdescribe का मतलब author believes that this event was not actually ethnic cleansing, it was something else. Okay, and the way in which it has been told to people is misdescribing. तो misdescribing के sense में deception ज़्यादा better word है. That means disingenuous. Okay, moving ahead. Were also blamed in further hand washing rhetoric on something dark and interior to dash and perpetrators alike. Okay, so एक चीज देखना, perpetrators मतलब the people who do the wrong act or the ones who are people who are basically doing the crime, or like the ones who are doing the who are indulging in the wrong act. तो perpetrators के पैरेलल कौन सा वर्ड आएगा? जिन लोगों को उसकी वजह से विक्टिम बनना पड़ा, है ना? तो सफरर्स भी जा सकता है, ठीक है, बट देन विक्टिम्स वुड बी अ better word. Okay, because like you have the perpetrators and then you have the victims. Okay, perpetrators मतलब क्राइम को करने वाले, victims मतलब जो उस क्राइम के झेलने वाले या फिर उस क्राइम का जो टारगेट है, दैट आर विक्टिम्स, राइट? ठीक है. सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि डिसइनजेनुअस इज better word than tragic and how it is like I've explained the logic. I hope आपको लॉजिक समझ में आ गया, है ना? सो आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी. ओके, बिकॉज लास्ट के अंदर जाके ये सी और ई ऑप्शन ही बचे थे, है ना? बिकॉज वी कैन रूल आउट दी अदर ऑप्शंस एंड सी ऑप्शन वर्क्स आउट टू बी द बेटर चॉइस एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दी like the reason. Okay, I hope Aman you have understood the reason.
Okay. Abhishek is asking what is rhetoric. Okay, Abhishek, rhetoric का मतलब होता है exaggeration. When you talk about rhetorical speech, okay, rhetoric is basically a type of speech. Okay, now rhetoric word has a different meaning in literature, which is very similar to sugarcoating. But in today's context, we use the word rhetoric more in sense of exaggeration. किसी भी चीज को आप जब कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के sugar coat करके बोलते हो, you show something to be better than it actually is. That is what rhetoric is. Like you find that politicians normally indulge in rhetoric. Okay, that means they make big claims. They talk in a grandiloquent manner. They make bombastic claims. Okay, so जो real चीज होती है आप उसको बहुत ज्यादा exaggerate कर देते हो. That sort of talk is rhetoric. Okay, मतलब उसमें reality obviously आपको पता नहीं चलती, but like you exaggerate it, right? Okay, चलो next question पे चलते हैं guys. Okay, so again guys, the interesting question on the screen. Let's see who all are able to answer this one. Okay, Rema says E option, Ingita says E option. Okay, Ashok says the option. Okay, Sankalp also says E option. Okay, so I can see most people are saying either C option or E option. Okay, guys, anyone else would like to answer? Okay, Anjali says B option, Suhit says D option. Okay, चलो यार guys, discuss करते हैं. Let's take this for discussion. Okay, so let me see who all have answered the question correctly. So we have Rehma Rizvi, correct answer. Ingita, correct answer. Nalin Sharma, correct answer. Okay, so I believe 3 people. Okay, Rehma, Ingita, and Nalin. Okay, so like I think this was a tricky one. Okay, a lot of you have got this one wrong. Okay, so let me just explain. थोड़ा सा tricky question था guys. काफी लोग confuse हो गए इसके अंदर. Okay, काफी लोगों को confusion हुआ होगा. ठीक है, so let me just explain. देखो, the answer to this question is going to be E option, that is genetic and pedagogy. Now, what is genetic? You already know, something that is a part of your genetic structure. That means एक ऐसी चीज जो आपने अपने पेरेंट्स से ली है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट जेनेटिक एंडोमेंट इज. मतलब जो क्वालिटीज ना आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू या जेनेटिक्स के थ्रू मिली है, मतलब उसके लिए आपने कोई वर्क नहीं किया, वो आपके अंदर नेचुरली आ गई बिकॉज दैट इज योर जेनेटिक ट्रेट. पेडागॉजी इज बेसिकली मेथड ऑफ टीचिंग. अब एक चीज समझना है, पेडागॉजी जो वर्ड है ना, पता हम कहाँ यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दे से दैट आवर टीचिंग pedagogy is superior to the other colleges and all that. So pedagogy is like the way in which you teach someone something. तो pedagogy एक तो formal education में use होता है ना, like the teaching pedagogy that we have in schools and in colleges etc. Pedagogy is also used in a more general sense to teach anything, like how you train someone or how you like teach, like make someone something understand. Okay, तो बच्चों को जो हम सिखाते हैं वो भी एक pedagogy होती है. like हम कैसे सिखाते हैं, क्या बताते हैं, ठीक है, जो हम बताते हैं वो वही सीखते हैं. so that is also pedagogy, right? Okay, so guys, देखते हैं. Every human being after the first few days of his life. So look at this, after the first few days of his life. Okay, that means कि जब वो पैदा होता है उस टाइम के कुछ दिन के बाद
इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. ऑन दी वन हैंड देयर इज हिज डैश. अब देखो यहाँ पे हिज लिखा है, इसका मतलब उस पर्सन की वो एक ऐसी चीज है जो उसी पर्सन के पास में से है. इट्स नॉट लाइक समवन एल्स इज गिविंग हिम. सो कॉन्स्टिट्यूशनल को तो गाइस क्रॉस कर देते हैं बिकॉज इट डज नॉट रियली मेक सेंस. ओके, आप इकोनॉमिक को भी क्रॉस कर दो क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग अभी पैदा हुआ है, ठीक है, ओके, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ, उसके पास पैसा कहां से आ जाएगा? लाइक वेयर वुड ही गेट द मनी फ्रॉम? सो इकोनॉमिक तो यार कोई सेंस बनता नहीं है ना. इकोनॉमिक तो इज लाइक रिलेटेड टू मनी और मॉनेटरी, तो इसको अपन हटा देते हैं. फिर आते हैं अपन यहाँ पे पर्सनल पे और क्लाइमेट पे. सो गाइस क्लाइमेट थोड़ा बहुत लग सकता है हमें क्योंकि एनवायरमेंट की बात हुई है, बट एक चीज समझना, लाइक कैन यू रियली से पर्सनल एंडोमेंट कि कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल पोजेशंस होती हैं. बट पर्सनल पोजेशंस आपके पास कब आती हैं? जब आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैच्योर हो जाते हो. लाइक फॉर एग्जांपल टुडे यू माइट हैव अ पर्सनल पोजेशन एज लाइक अ कार और बाइक एंड हाउस एंड ऑल दैट. बट यार यहाँ पे आपको लगता है कि एक ऐसा बच्चा जो भी पैदा हुआ है एंड इट्स ओनली अ फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ, ओके, ही विल ओन समथिंग ऑन अ पर्सनल बेसिस. लाइक do you really think that he can buy something and like have something on personal basis? Okay, now personal is a word that we use mostly with adults, okay, like because they own things, they have possession on things. जबकि अगर अपन एक ह्यूमन बीइंग की बात करें जो भी पैदा ही हुआ है, तो या तो आप कॉन्जेनाइटल बोल सकते हो. कॉन्जेनाइटल इज लाइक समथिंग दैट इज फ्रॉम बाय बर्थ, या जेनेटिक बोल सकते हो. लेकिन एक चीज और सोचो, लास्ट में ऑप्शन अपने पास आ गए बी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन, राइट? बी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन, ठीक है, तो इसमें से ज्यादा बेटर कौन सा है? ओके, देखो, एजुकेशन गाइस इज अ मोर specific term that applies mostly in context of like formal education. Pedagogy is basically a method of teaching in which the parents of the child teach him or her how to do things, ठीक है. तो जो पेरेंट्स सिखाते हैं उसके लिए ज्यादा बेटर वर्ड क्या होगा? पैडागॉजी. ओके, सो एनवायरनमेंट का यहाँ मतलब मौसम से नहीं है. एनवायरनमेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपके आसपास का जो माहौल है, ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, वो कैसे चीजों को करते हैं. यू लुक एट देम एंड लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड यू कॉपी द सेम, राइट? ओके, सो दैट इज द एनवायरनमेंट. अ लॉट ऑफ यू आर थिंकिंग यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब है क्लाइमेट, मौसम. नहीं, वो एनवायरनमेंट नहीं है ना. हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपके आसपास का माहौल क्या है, वो एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना. तो ये जो एनवायरनमेंट है ना गाइस, इसके साथ जो पेरेंट्स के सिखाने का तरीका, दैट इज पेडागोजी. ओके, सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी genetic and pedagogy, because genetic is something that you have from the parents itself, like that is something that belongs to you. You get it from both. Okay, and pedagogy is like how you are being taught things. Okay, and it can be anything that you are being taught, right? Okay. Okay, yes, Ingita, genetic means something that is inherited, something that you have endowed, something that you have been endowed with. ठीक है. ओके, बी ऑप्शन एक बहुत क्लोज ऑप्शन था गाइस, लेकिन एजुकेशन उतना प्रॉपर वर्ड यहां नहीं जा रहा. और कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है रिलेटेड टू बर्थ. लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे बात हो रही है उन सारी क्वालिटीज की जो आपके अंदर या तो इनहेरिटेड है, ठीक है, या फिर ऐसी क्वालिटीज जो आपको आपके आसपास के माहौल से सीखने को मिली है. दैट मीन्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग pedagogy. Okay, so the best option that we will have here is E option. I hope all of you have been able to understand the logic and why the other options have been ruled out. Okay, so थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा. Okay, but I hope all of you have been able to understand. So next question पे चलते हैं guys. The answer to this one is E. Okay, moving on to the next question. Okay, so next question on screen.
Okay, 20 seconds, guys. Have a look at the options. Okay, last 10 seconds. Anyone else would like to answer? Okay, so चलो यार डिस्कस करें. Let's discuss this question. Okay, so Shantanu correct answer, Nalin correct answer, Tripti Pandey correct answer, Aman correct answer. Okay, so we have four people who have answered the question correctly, and Sankalp also correct answer. So, so guys, answer is going to be your option D. Now, I believe that this was a fairly simple question if you understood the concept, you understood the logic. तो मैं थोड़ा सा आपको explain करता हूँ, ठीक है? And if you have any doubts, you can ask me. So you can see their achievements in the field of literature is described as dash. Sometimes it is even called dash. So guys, focus on this word even. इवन का देखो मीनिंग क्या होता है. इवन वर्ड का मीनिंग क्या होता है पता है? इवन वर्ड का वैसे तो मीनिंग दो तीन होते हैं, ठीक है, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग वेर यू एम्पलीफाई द इंटेंसिटी ऑफ द प्रीवियस वर्ड. ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं. सम पीपल से दैट ही इज अनसक्सेसफुल. सम पीपल इवन से दैट ही इज अ फेलियर. तो इवन जब आप वर्ड यूज करते हो ना, ठीक है, तो वो वर्ड, ठीक है, व्हाट इट डज इज दैट इट एम्पलीफाइज द प्रीवियस वर्ड, and both the words that you attach when you use the word even are of similar nature, one being more intense than the previous one. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं यहां तक की. जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, some people say that he is unsuccessful, some people say that he's like, some people even say that he's a failure. Okay, so unsuccessful and failure, like they are one and the same thing, but failure is like a more intense version of unsuccessful, है ना? ठीक है, so even का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट वाले वर्ड को एम्पलीफाई करके वापस लिख दिया, और हिंदी में कहें तो यहां तक की. तो अब ये यार एक चीज समझो, यहाँ एक चीज समझो. मैग्निफिसेंट और इररेस्पॉन्सिबल तो ये अलग अलग कनोटेशन के वर्ड्स हो गए. मैग्निफिसेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, इररेस्पॉन्सिबल इज अ नेगेटिव वर्ड. तो ये इसका एम्पलीफाइड फॉर्म तो हो नहीं सकता, इसको क्रॉस कर देते हैं. इनसिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल, गाइस, इनसिग्निफिकेंट एक नेगेटिव वर्ड है. इनसिग्निफिकेंट इज लाइक समथिंग दैट इज close to nothing, and influential is like something that is very impressive. So again guys, these are words of opposite connotation, so this can also be ruled out. Significant और paltry भी नहीं हो सकता, because significant का मतलब होता है something that is important, something that has some value, and paltry का मतलब होता है something of very low importance, low like you know, something that is unimportant or something that is close to nothing. Paltry मतलब कुछ भी नहीं है या बहुत trivial है, बहुत चीज कम है. ठीक है, तो यार ये भी वर्ड्स जो हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज व्हाट आई सेड इज कि इवन आएगा तो इसका मतलब प्रीवियस वर्ड को आप एम्पलीफाई करके लिखोगे, है ना? सो यहाँ पे देखो, their achievement in the field of literature is described as unimportant. Unimportant is like something that does not have any significance, so that is a negative word. Trivial, trivial का मतलब something that is close to nothing. Okay, like trivial, when you say trivial, trivial means like it's totally unimportant, it's like it's totally insignificant. Trivial बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है. अनइम्पॉर्टेंट का थोड़ा सा एम्पलीफाइड फॉर्म, ठीक है. तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, एंड एज यू कैन सी इट सेज समटाइम्स इट इज इवन कॉल्ड, दैट मींस वी नीडेड वर्ड्स ऑफ सिमिलर नेचर. ठीक है, या तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं या ये दोनों नेगेटिव आ जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थ्री ऑप्शंस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज इट्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन. सो वी रूल देम आउट, एंड द ओनली आंसर कैन बी ऑप्शन डी, बिकॉज यू हैव वन नेगेटिव एंड द अदर वन इज आल्सो नेगेटिव in a more extreme form. Okay, so negative guys, answer is going to be D option. Okay, so I hope you have been able to understand the logic of this question as well. Okay, so I can see a lot of you have answered the question correctly. Pranav, Inkita also have given the correct answer. Yes, D option. Okay, so guys, next question. Okay, so next question on screen. Let's see how many of you are able to answer this one.
Okay, Sankalp, Aman, and Brahma say B option. Okay. Okay, so guys, what do others think? Kash also says B option. Okay, Tripti Pandey also says B option. Okay, Anjali says B option. Okay, okay. Pranav Bose says B option. Okay, last 10 seconds, guys. Anyone else would like to answer this question? And then we pick it for discussion. Last 10 seconds. कोई और करना चाहता है आंसर इस क्वेश्चन को? Okay, so chalo, let's discuss this question. Okay, so Sankalp, Aman, Rema, Kash, Tripti, Anjali, Pranav, Shantanu. Okay, क्या बात है? Okay, so guys, I can see most of you have answered this question correctly. Okay, so now let me explain. देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना है. From the time she had put her hair up, every man she had met had groveled before her. Groveled का मतलब क्या होता है? Groveled means to have a servile attitude. Servile का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से एक्ट करना कि जैसे दूसरा इंसान आपका नौकर हो. ठीक है, लाइक व्हेन यू ग्रोवल यू बेसिकली लाई डाउन इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन. इट्स लाइक अ सर्वाइल और स्लैविश एटीट्यूड. स्लैविश एंड सर्वाइल का मतलब क्या होता है? टू एक्ट लाइक अ स्लेव. ओके, सो लाइक obviously like you're talking about a certain girl and like maybe like she was very beautiful or something. Okay, like every man has acted in a servile or slavish manner, and like when you have people who act in a servile manner or they grovel before you, you obviously become indifferent to what they think, and like you become like contemptuous का मतलब आप के सामने जब लोग लिटरली सर्वाइल और स्लैविश एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो आप उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे. ठीक है, सो फ्रॉम द टाइम शी हैड पुट हर हेयर अप, एवरी मैन शी हैड मेट हैड ग्रोवल्ड बिफोर हर एंड शी हैड एक्वायर्ड अ मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर सेक्स व्हिच वाज अ ब्लेंड ऑफ डैश एंड डैश. तो गाइस क्या लगता है आपको, कैसा वर्ड आना चाहिए? देखो, इफ लाइक एवरी मैन इज लाइक is trying is like is running behind you and like they're acting like slaves, they're acting like servile people, how do you think you the girl is going to treat them? Like she's going to treat them with a lot of contempt. Okay, like she would look down upon these people and like she would consider them unworthy, है ना? तो अब देखो, जब सारे लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, सर्वाइल एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो अपन हटा ही सकते हैं. एडमायर तो आप करोगे नहीं, है ना? लाइक द गर्ल इज नॉट गोइंग टू एडमायर बिकॉज लाइक दीस पीपल आर एक्टिंग इन अ सर्वाइल और स्लैविश मैनर, दे आर ग्रोवलिंग बिफोर हर. इसको तो हटा ही देते हैं अपन, है ना? इनडिफरेंस का मतलब होता है टू गिव नो इंपॉर्टेंस. ओके, तो ये हो सकता है. कंटेम्प्ट मीन्स to consider yourself superior and the other person inferior, or to look down upon the other person. ठीक है, तो ऐसे सोचना कि जैसे आप तो सुपीरियर हो और दूसरा इंसान कुछ भी नहीं है. that is the attitude of arrogance or contempt. Okay, so you have words like contemptuous, arrogance, supercilious, condescending. ये सारे words का meaning वही होता है कि like you consider the other person to be unworthy, right? तो ये हो सकता है, काफी अच्छा ऑप्शन है. Impertinence and temperance. Guys, temperance is a more positive word. When you have temperance, you have control, right? So temperance means like when you have control in terms of what you eat and what you drink. तो ये temperance word तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, है ना? It's a more of a positive word, so we can rule this one out. Fidelity का मतलब होता है trust. Fidelity, guys, is a positive word. It means trust, and I hope like many of you might have noticed the root fidelis. Okay, fidelis is the root that we have for trust. Okay, तो fidelis root का word है guys fidelity, and it's a positive word, तो इसको अपन rule out कर देते हैं because this situation does not require any positive word. Now arrogance can go. Arrogance is like a word that can go because like the people are groveling before her, तो like she can become arrogant, but arrogance के साथ फिर ये fidelity नहीं जाएगा, है ना? Fidelity की वजह से this option will also be ruled out. Okay. Yes, Aman. Adulatory भी होता है synonym. Okay, adulatory basically is like sycophancy.
Okay, so guys, I hope all of you have been able to understand this question. It looked difficult from the outside, but once you understand the connotation of the words and like once you logically start decoding the question becomes manageable. तो आपको ना मैं वही चीज कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप देख रहे हो ना तो उसको लॉजिकली डिकोड करो, देखो किसी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह का कनोटेशन आ रहा है, and like a lot of times you will be able to guess the correct answer. Okay, so I hope all of you have been able to understand the logic involved. ठीक है, so guys B option is the answer. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, so let's see who all have answered the question correctly. So Pranav, Rehma, Aman, Tripti, Kash, Abhinav have answered the question correctly. Okay, so I can see a lot of you have been able to understand the question. Okay, so the answer guys is going to be option D. काफी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इट. This simplified guide to decision making process is a must read for anyone facing important real estate, personal or professional decisions. Okay, so if I look at the D option, it says that you're referring to a certain book, and this book is a very simple way to understand, or it's serving as a guide to the decision making process, and it's something that's going to be a must read for anyone who is currently facing important real estate, personal, professional decisions. Okay, so a decent option guys, D option तो अपना हो ही सकता है ना. बाकी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सी. It says, if you look at the A option, it says maximizing personal, professional real estate decisions. Okay, so do you really think that there is anything in English like maximizing a decision? There's nothing like maximizing of decision, right? So ये option अपन हटा सकते हैं. Primer is an introduction to something or the first layer or first level of something. तो प्राइमर तो जा सकता है, बट प्राइमर भी क्या थोड़ा सा उतना सही नहीं होगा. मैक्सिमाइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिकॉज यू कैनॉट मैक्सिमाइज अ डिसीजन, राइट? यू कैनॉट इनैक्ट अ डिसीजन. ओके, यू कैनॉट इनैक्ट अ डिसीजन, right? Okay, so enact is like to play the role of, and you cannot enact a decision, and there's nothing like under a decision. Okay, and that is also going to be like totally out of context. The answer very simply is going to be option D, that is this simplified guide to the decision making process must read for anyone who is facing important real estate, personal and professional decisions. Yes, Siddharth, correct answer. Yes, Anjali, correct answer. Yes, D option. Okay.
Next question on the screen, guys. What do you think should be the answer for this one? 30 seconds, quickly answer. What do you think should be the answer for this question? Okay, so Sankalp says B option. Aman says B option. Tripti says B option. Okay, so let's see, guys, who all have answered the question correctly. देखते हैं. Sankalp correct answer, Aman correct answer, Tripti correct answer, Nalin correct answer, Kash and Muskan correct answer, Rehma correct answer, Vikas correct answer, Pranav correct answer. So yes, guys, all of you have answered the question correctly. I can see most of you have given the correct answer. The answer is option B. Physicians may soon have ways to help paralyzed people move their limbs by bypassing the damaged nerves that controlled their muscles. So, damaged is the right adjective to modify the noun nerves. Okay, क्योंकि nerves damage होती हैं और damage हो जाती हैं तो obviously वो काम नहीं करती हैं. Like you obviously have to find a way to make them work. Okay, and that is what causes paralysis. That is damaged nerves. अब देखो detrimental हो नहीं सकता because detrimental is something that is harmful. Now you cannot have harmful nerves. ठीक है, तो नर्व्स डैमेज हो गई हैं और उनको बाईपास करना है सो दैट यू कैन हेल्प अ पैरालाइज्ड पेशेंट. Detrimental, guys, is harmful. Involuntary muscles होती है, nerves नहीं होती. Okay, like you have two types of muscles. You have voluntary muscles and you have involuntary muscles. Like for example, you have like the biceps and triceps. They are like voluntary muscles, and then you have involuntary muscles. There's nothing like involuntary and voluntary nerves. तो इसको अपन हटा देते हैं. Impediments का मतलब होता है blockages, and there's nothing like complex nerves. See, what happens in paralysis? In paralysis, some of the nerves get damaged. अभी उन damaged nerves को अपन replace करते हैं, ठीक है, एक तरीका निकालते हैं so that the patient who has damaged nerves which are not working could be helped. Okay, so there is nothing like a complex nerves, and like paralyzed people don't have complex nerves, right? ठीक है, तो ये complex भी अपना wrong हो गया. Answer is B option. Okay, Shantanu, C option इसलिए wrong है because C option means involuntary. Involuntary का मतलब होता है something that is not in your control. Now, if you know biology, you have voluntary and involuntary muscles. There is nothing like involuntary nerve. ठीक है, because muscles में कुछ muscles को तो हम control करते हैं तो वो voluntary muscles होती हैं, then you have involuntary muscles. ठीक है, and again C option में reason भी wrong है क्योंकि फिजिशियन को एक तरीका निकालना है पैरालाइज लोगों को मदद करने का, उन्हें कोई रीजन नहीं ढूंढना. ओके, व्हाई वुड लाइक द फिजिशियंस लुक फॉर अ रीजन टू हेल्प द पीपल? ठीक है, द फिजिशियंस ड्यूटी इज टू हेल्प द पीपल, राइट? तो सी ऑप्शन में रीजन भी बिल्कुल गलत है ना. प्रणव, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है, इम्पेडिमेंट इज बेसिकली लाइक अ सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक, और यू कैन से like hurdle. So when you have impediments to something, it means it's going to slow you down. It's a hurdle. ठीक है, तो impediment एक hurdle होता है. किसी काम को करने में जो आपकी स्पीड कम हो जाती है ना, so that is what impediment is, because like you have hurdles and you have blockages. Okay, you have road blocks. That is impediment. Okay, so guys, moving on to the next question. Okay, so an interesting question, guys. प्रणव बता दिया ना, अभी सुना नहीं तुमने? प्रणव, impediment is like a hurdle.
it's a roadblock. For example, let's say lack of education is a major impediment to success. Okay, so guys, have a look at this question. Last question for today. Let's see who all can answer this one. Yes, Pranav, that can be one of the issues. There is always some delay on the comments. You're right. Okay, so let's take this for discussion. So let's see who all have answered the question correctly. Sankalp, correct answer. Aman, correct answer. Okay, so Sankalp and Aman have answered the question correctly. Okay, Sankalp and Aman, both of you have answered the question correctly. So guys, this was a slightly tricky one because it required the understanding of the context and the better usage. So थोड़ा सा मैं इसको explain करता हूँ guys. ठीक है, क्या question है? In these bleak and depressing times of dash prices, non-performing governments and crime rates, Saurav Ganguly has given Indians a lot to cheer about. Okay, Pranav, this is the last one. Okay, Pranav, this is the last question, and all of you do like the session. Okay, anyone who is watching the session, do like the session, guys, and do join me today at 6 o'clock as well on the Unacademy app. I will be sharing the link. Okay, and those of you who are not on my Telegram can join me on Telegram as well. ठीक है, so इस क्वेश्चन को guys explain कर लेते हैं before we end the session. Okay, so देखो क्या है, in these bleak and depressing times of dash prices. अब देखो prices की बात हो रही है ना, prices ascend नहीं कर सकती because there's nothing like ascending and descending prices. तो ascending को तो हटा देते हैं, ठीक है ना, so like ascending and descending is not a sort of verb that we use with prices, so we can rule this out, no problem with that. Debilitating का मतलब क्या होता है? To weaken. Okay, किसी चीज को कमजोर कर देना, weaken कर देना. So again, you cannot weaken the crime rate, so we can rule this one out. If you look at B option, it says booming. Okay, now there is nothing like booming crime rates. Okay, so we can rule this one out also. So what are the options? Now we have the option of escalating and spiraling and increasing and soaring. So यार अब यहाँ पे ना confusion ये है कि escalate और spiral are very similar words, but the question is that what is a preferable word when it comes to prices. ठीक है, so what do you say when the prices start going out of control? They're escalating out of control or they're spiraling out of control? Okay, so the better usage is like you have prices that are spiraling out of control. ठीक है, तो वैसे तो escalate को भी आप यूज करते हो, but then the thing is that if you look at the better usage, it's always prices spiraling out of control. That means कि इतनी ज्यादा prices बढ़ रही हैं कि वो भाई बढ़ती ही जा रही हैं. ठीक है, like they're spiraling out of control. Okay, so that is like the word spiral. And then you have the word crime rates. Now crime rates, guys, is basically referring to the rate of frequency of crime. Okay, so we can go in for the word soaring because soaring is actually something that is continuously increasing. Okay, so if I look at A and C option, though the meaning of the words is very similar,
Okay, and like you might think that both of them are actually very similar options. This is an actual CAT question also. Okay, but then a much better option in context of prices would be spiraling, and for something that's a frequency, because rate का मतलब क्या होता है frequency, so that is soaring. Okay, so the answer becomes option C, and this was a tricky one, I would say, because A and C option were very close. Okay, but the better option is option C. Okay, so you have the prices that are spiraling. Okay, something that's increasing, something that's going up. It should not be escalating, it should be spiraling. Okay, so that was the answer, guys. C option हमारा आंसर हो जाएगा. Okay, so that's it for today. So what is now the further plan? Today we have a session on critical reasoning at 6 o'clock, guys. 6 p.m. pe hai, and it's going to be on Unacademy app. Okay, Unacademy app. Those of you who haven't downloaded the app, okay, you should download the app. You should use my code HSING to get free access to the sessions of all the faculties. So आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऐप को अभी डाउनलोड नहीं किया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको ये कोड यूज करना है. यू विल गेट एक्सेस टू व्हाटएवर फ्री सेशंस आई पुट ऑन द Unacademy app. They go by the name special sessions. So 6 o'clock, guys, it's a special session, it's a free session, and in order to get access to the free session, you just have to use this code. Yes, Pranav, I have a Telegram channel. Okay, so guys, anyone who wants to attend all sessions that I take and you want to get notification of when I will be taking my session, so what you have to do, guys, you have to connect with me on Telegram, and that is Himanshu_Unacademy. Okay, so it's also given in the description. Okay, otherwise you can just search the Telegram channel, you will get it easily, Himanshu_Unacademy. So just connect with me there. So I will be sharing the links of whatever sessions I take. Today we have a session at 6 o'clock on critical reasoning. We will basically be discussing the concepts of assumptions, conclusions, and strengthening and weakening of the argument, and we will be solving a lot of questions. ठीक है, so वहाँ पे आप मुझे connect करो, ठीक है, and then we will meet again at 6 o'clock. Okay, so that's it, guys. Thank you very much. See you at